वो हवा की तीव्रता 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। प्रिकॉशंस ले रखे हैं, मास्क लगा रखा है, ग्लव्स नहीं है, वी रन आउट ऑफ दैम। वैसे तो इंडियन ग्रोसरीज भी लानी थी बट इंडियन ग्रोसरी स्टोर बहुत ज़्यादा दूर है एंड माई हस्बैंड इज़ हैविंग सीवियर बेकिंग, सो आई थॉट टू अवॉइड दैट। एंड यहाँ पास में हाफ एन आवर की वॉक पे एक फूड डेली स्टोर है, होपफुली मुझे वहाँ से कुछ मिल जाएगा और आई होप आई कैन फाइंड ब्रेड, सो लेट्स सी एंड चेक इट आउट। इट्स अ विंडी डे, बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। हवा वाकई में बहुत तेज है, मुझे मुझे बहुत स्टैमिना लगाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। इट्स पुशिंग मी टुवर्ड्स द रिवर। यहाँ पे हर जगह पेडेस्ट्रियंस भी लाइट्स फॉलो करते हैं। अभी रेड लाइट है, यू कैन सी। पूरा स्टोर एंड आई एम वेटिंग फॉर माई लाइट। यार अभी इतनी देर हो गई, सभी जगह की लाइट वाइट हो गई है, मेरी नहीं हो रही है, तो आई एम थिंकिंग टू जंप द लाइट। मारना मत। सो आई एम डन विद माई ग्रोसरीज, आई मीन द थिंग्स आर रिक्वायर्ड। मुझे काफ़ी कुछ मिल गया और मुझे उसके पास एक फार्मेसी दिखी है, सो आई कैन टेक द पेन रिलीफ मेडिसिन ऑल्सो। मैं इतना टेंस थी कि वेयर विल आई फाइंड फार्मेसी। फाइनली मुझे मिल गई है एंड लेट्स चेक आउट द ड्रग्स देयर। Ducks roaming in this garden peacefully. Wow, this city is a beauty. The hospital. ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो लास्ट क्लिप आपने देखी वो मेरे जस्ट पास में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वॉक पे एक हॉस्पिटल है उसकी थी। आई लिव इन सिकॉकस न्यू जर्सी विच इज़ ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन मैनहट्टन। I must say this is really a beautiful city, as you can see the river and I really enjoy the sunset view from here. Like I can sit for hours and enjoy the view. So आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। Till then please stay safe, stay healthy and do like, share and subscribe my channel Roller Coaster Life. Bye bye.